Can you hear me? No beta. हाँ हाँ जी, क्या देख रहे हैं आप? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? ओके, आई एम विद डॉक्टर अब्दुल्ला. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम, वी कैन हियर यू. खाल साहब, मैं देख रहा हूँ कि आप कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आई. नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आवाज़ भी आ रही है. कैन यू हियर मी? हाँ जी, दिस इज लिवर, ठीक है, फाइन. और आपको आवाज़ आ रही है? नहीं, आप नहीं, सबसे पहले आपका हार्ट कहाँ पे? हार्ट कहाँ पे? हार्ट, दिल, ये. दिल. ओके, राइट. सो यू आर लिटिल फर्दर डाउन. अगर थोड़ा सा आप वापस आएंगे, थोड़ा सा वापस आइए, क्योंकि लिवर को आपने देखना है कि आपका आईवीसी कहाँ पे. हेलो, आपकी आईवीसी कहाँ पे? थोड़ा सा वापस है. अब लिवर हाँ जी यार, को वो आवाज़. ये आपकी देखे ना. कैन यू हियर अस नाउ? Yes, I can hear you very well. Thank you very much. Okay, now this is the liver. Now, in this liver, can you identify which is the left hepatic vein, which is the middle hepatic vein, where is the umbilical portion of the? Yes, fine. These are the hepatic veins. हाँ जी. These are the hepatic veins. Fine. Okay. ये umbilical portion of left portal vein है, ठीक है. And here's the segment 2, segment 3. This is the diaphragm, right? This is the diaphragm. ये कुछ चीज़ आपकी आई थी. What is this? This is obviously this is one of the hepatic veins जो कि इधर से आ रही. जो ये umbilical portion, ये तो portal vein तो ये हो गई ना. तो this has to be hepatic vein, ठीक है. थोड़ा सा इसको घुमाइए ताकि देखें कि और क्या चीज़ है आपको. हाँ, ये मिडल हेपेटिक वेन थी, ठीक है. और घुमाएं, और घुमाएं. यहाँ पे आपके राइट आ जाएगी और साथ ही आपके इनफीरियर वेना केवा आ जाएगा. थोड़ा सा आगे पुश कर दिया आप, हल्का सा जेंटली. तो ये दिस बिकम्स योर एग्जामिनेशन ऑफ द लिवर. यहाँ पे आपको पोर्टा इस साइड पे आपको आना चाहिए. सो पोर्टा भी आप थोड़ा सा देख लें. यहाँ पे हल्का सा दाएं बाएं टर्न करें. You will be able to big wheel up and slide push further. हाँ, घुमाएं clockwise. हाँ, ये आगे चलें और आगे चलें और आगे चलें. थोड़ा सा आगे पुश कर, क्योंकि ये जगह जो है और आगे जाए. हाँ, ठीक, शाबाश, ठीक. अच्छा, अब यहाँ तो मज़ीद इस साइड पे आएंगे तो यू विल बी एबल टू सी द inferior vena cava. Inferior vena cava with 3 veins entering into the inferior vena cava. Slight pull back. हाँ जी, ठीक है. और पुल और रोटेशन इस साइड पे लाइक दिस. हाँ, ये देखिए, दिस इज द पोर्टा वेन, दिस इज द पोर्टल वेन, ठीक है. और यहीं पे इसके साथ ही आपको सीवीडी मिलेगी. ओके. और इस साइड पे, और इस साइड पे ये आ गई आपकी बैगी. दिस इज द लिगामेंटम वेनोसम एंड आईवीसी, ठीक है. दिस इज आईवीसी. Now, these are the midline structures. Now, if you are going to turn further clockwise, you are going to go to the other midline structure, that is abdominal aorta, and here is the abdominal aorta, right? तो अब abdominal aorta को अपने ट्रांसड्यूसर के नीचे लेके आए, ठीक है. टर्न, ठीक है. थोड़ा सा और. हाँ, ये. Now you seen the abdominal aorta. Okay, fine, no problem. दोबारा आ जाएगी, कोई बात नहीं, no big issue. हल्का से वापस जाएं. ये आ गई एब्डोमिनल एओर्टा. अब हल्का सा देखो, ये दिस इज एब्डोमिनल एओर्टा. अब वंस यू सीन द एब्डोमिनल एओर्टा, कीप इट अंडर योर ट्रांसड्यूसर एंड जेंटली स्लाइड अलोंग द एब्डोमिनल एओर्टा इनटू द, और हल्की सी रोटेशन के साथ ये ऐसे ना देखते हुए, ये जो ना, ये ऐसे हल्की हल्की, so that everything should be under your vision, and the first blood vessel which is going to come out of the abdominal aorta is celiac trunk. Now, once the celiac trunk is there, you need to follow the celiac trunk. This is mesenteric, this is the celiac artery. Now, you need to follow the celiac. Okay, big wheel slightly away from you and slide gently along the celiac artery.
शाबाश. Slide further forward. हाँ, you will be onto the pancreas. ठीक है. थोड़ा सा मैं पीछे हाँ, तो हल्का सा. ठीक है. Because this is the target where you want to go. Okay. Go further. ये किडनी है. This is kidney. ठीक है. देखिए ना, this is lateral. हाँ, दोबारा पीछे आ गया। कोई बात नहीं. ये देखिए ना, ये जगह आपको नजर आ रही है कि सॉल्ट पेपर पेस्ट ये यहाँ पे है. दिस इज द प्लेस वेयर यू वांट टू गो. ओके, फाइन. थोड़ा सा आगे. हाँ, नहीं, सक्शन सक्शन. हाँ, if you're lost, come back Okay. and start all over again. ये किडनी है. ऑब्वियसली किडनी से हल्का सा बिग व्हील स्लाइटली अवे फ्रॉम यू एंड कीप. हाँ, कीप द सक्शन. हाँ, शाबाश. सक्शन. ये जितनी भी सक आउट. हाँ, ये. Now you're able to see the structures underneath. Okay. Now you see. तो इसको और नहीं, ये देखो ना, आप लेवल फिर अब आपकी you start to see few other things. Okay. This is not where you want to go. आपकी जो जगह है ना, देखो आप कहाँ पे थे? Clockwise थे. समझ गया। If you gone so much counterclockwise, obviously you'll start looking the things on the right. Extreme right. So basically, you want to see the things on the posterior aspect of the liver of the stomach. So you have to stay clockwise or to the midline. तो इस जगह पे आपका ये चीज़ें आएंगी. ठीक है. तो slight further push because the blood vessels are on the retroperitoneal tissue. ठीक है. थोड़ा सा आगे जाएं. हाँ, ये थोड़ा सा और आगे. Okay, good. ठीक. यहाँ पे कुछ ये जो शेडोइंग है क्या हो सकती है? ये वाली, ये तो ये वाली, ये. एयर आर्टिफैक्ट्स। हाँ, एयर आर्टिफैक्ट्स हैं. कहाँ पे एयर हो सकती है? क्या ख्याल है? if this is your lumen, जिस पे चीज़ें मूव भी कर रही हैं. सर उसमें गट के अंदर। हाँ, गट. तो obviously this is some kind of gut. So this is not the thing that you want to see. ठीक है. So you need to come back. Again identify something which is identifiable. ठीक है. Sharp. Now, good. That makes sense. ठीक है. ये आ गया. अब this the sort. हाँ, this is a mass. Yeah, बिल्कुल जी. Some kind of mass formation. तो इसको ज़्यादा clear करें. हाँ, ये. Now let's see what is right there in the center. Now, नहीं, वो जो center में था उसको देखिए. ये क्या है? Let's try to find out. नहीं, जिस चीज़ को आपने सेंटर में रखा है उसके आगे जाएं. जहाँ पहले वो डक्ट आई थी, इस साइड पे. हल्का सा लाइक दिस. नहीं, वो चीज़ फिर मिस हो गई. ठीक है. ओके, फाइन. आओ. जी सर. Now, what have I done? Just fine movement, nothing more than that. ठीक है. इसके अंदर अब now I can see that there is a clear cut fall of the. This is the. नहीं, mass नहीं है. देखो ना, ये pancreatic duct आपको अच्छी खासी नजर आ रही है. This is the pancreatic duct. ठीक है.
दिस इज द पैंक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रेटिक को ये जी सर ठीक है, दिस इज द पैंक्रियाटिक डक्ट। अब इसको पैंक्रियाटिक डक्ट को मैंने फॉलो करना है टू द राइट। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट बिग व्हील अप, स्लाइड पुल बैक, गायब, ओके आई गो बैक। मास सर, ये मास नहीं है यहाँ पे जो पैंक्रियाटिक बॉडी में जो लग रहा था? Is पहले this हमारा भी इम्प्रेशन था कि है, लेकिन बीच में पैंक्रियाटिक डक्ट फर्स्ट क्लास नजर आ रही, तो इट्स जस्ट द अपीयरेंस। अच्छा, ठीक। देयर ये गट है। चलो लेट्स टेक अ व्यू फ्रॉम दिस, वहाँ से देख लेते हैं। नॉर्मल पेनक्रेटिक जो पेनकाइम है ये जरा एब्नॉर्मल सेल है। हाँ एबनॉर्मल है, Abnormal है? दिस इज एबनॉर्मल, जी जी दिस डेफिनेटली एबनॉर्मल। तो नॉर्मल में आ ही जाता है, मतलब कुछ ना कुछ करके मैं तो थोड़ा बहुत कोई बात नहीं, वो तो देखो चीज़ है कि यही तो बात है कि दैट इज समथिंग विच कॉल्ड, देखो ना, दिस इज समथिंग एबनॉर्मल, डेफिनेटली एबनॉर्मल, ओके। सो पॉसिबली यही हम देख रहे थे वहाँ से, ओके ओके। दिस इज द पेनक्रेटिक हेड। दिस इज इन द पैंक्रियाटिक हेड, बिल्कुल। लेकिन जब तक आप ये पोर्टल वेन ना देख लो, तब तक आपको ये नहीं होता कि अच्छा भी मैं हूँ कहाँ पे। वंस यू सीन द पोर्टल वेन देन यू नो कि यस आई एम एट दिस पोजीशन। तो उसके बाद फिर गोइंग दिस वे यू आर एबल टू मेक आउट डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। लो ये पोर्टल है ये पोर्टल वेन, लो इसको संभालो। सो देयर इज अ मैस लेशन ओवर हियर। हाँ ये देखो ना, अब ये क्या है, ये कॉमन बाइल डक्ट आई थी सर। शाबाश, वापस लेके आए कौन बाल डक्ट, वापस लेके आए। नहीं, कौन बाल डक्ट जो आगे गई है ऑब्वियसली ये आएगी ऐसे, ओके लेट गो लेट गो लेट गो लेट गो लेट गो लेट गो। ये लिफ्ट नोड है बड़ा आई नो, ये कॉमन ठीक है, लेट गो लेट गो लेट गो, लेट इट कम अंडर योर ट्रांसफर बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज ऑफ आवर इंटरेस्ट, ओके ठीक है। स्लो नहीं आप बहुत टेंस हुए ये, ठीक है। अच्छा दिस इज काउंट बाल डक्ट। अब काउंट बाल डक्ट आपकी आ गई है, नाउ यू नीड टू फॉलो द काउंट बाल डक्ट अप, यू नीड टू फॉलो द काउंट बाल डक्ट डाउन। यू नॉट इंटरेस्टेड इन द ब्लड वेसल, क्योंकि There is a case over there with a gallbladder carcinoma. We want to show the audience that image. Can we shift? हाँ ये प्लीज। अच्छा ये कॉमन बाइल ये काउंट बाल, अब काउंट बाल डक्ट आ गई है तो यू नीड टू फॉलो द काउंट बाल डक्ट टू द राइट। नहीं नहीं देखो इसको ना ट्रांसड्यूसर के अंदर एंड फॉलो इट ऑल द वे डाउन टू द पैंक्रियास, दिस इज द पैंक्रियाटिक हेड, एंड देन फॉलो इट बैक ऑल द वे अप टू द लिवर, ठीक है। दैट्स हाउ यू डू इट। इसमें मूवमेंट ये वाली करनी है आप हल्की सी इस साइड पे बाय कीपिंग, हाँ ठीक है, सक्शन 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 टू क्लॉकवाइज बिग व्हील अप। देखो आपकी सीवीडी गायब हो गई ना, हाँ ये तो सीवीडी शुड बी क्लियरली विजिबल टू यू, हाँ मेक इट विजिबल टू यू, हाँ ये देखो अब ना ब्यूटीफुल, it's entering into the हाँ ampulla इट्स now. एंटरिंग इनटू द एम्पुला, नाउ दिस इज द एम्पुला एंड यू कैन सी सम मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड एयर, ठीक है। सक्शन 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 सक्शन, एयर नहीं आनी चाहिए, ये एयर आ गई, हाँ किधर गई सीवीडी, गायब नहीं होने, हाँ ये आ गई, ठीक है। नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट। नाउ टू गो टू द हाइल ऑफ द लिवर, काउंटर क्लॉकवाइज एंड बिग व्हील अवे फ्रॉम यू एंड स्लाइड पुश, हाँ
हाँ ये big wheel away from you like this with a movement of your shoulder. हाँ further बहुत ज़्यादा आप हाँ ये that's how you do it. Good, शाबाश. तो सब the whole thing हाँ ये that's very good. Good. ठीक है, okay, fine. जी Air artifacts. यार तो suck out दिया. अच्छा उसके बाद कि you are in the stomach तो उसकी वजह से भी है तो you need to go a little further down. Wait, एक मिनट रह गया। हाँ ठीक है, go a bit further down into the duodenal cap. हाँ ये नहीं आप देखो मकसद है कि आपको स्ट्रक्चर आ गया नीचे, अब इसको स्ट्रक्चर को आपने फॉलो करना है टुवर्ड्स द हाइलम ऑफ द लिवर, जहाँ पे आप उसकी बाइफरकेशन देखिए कॉमन पेडिक तक देखिए, तो गो लाइक दिस. वो अभी तो दूसरे कमरे में ना, वो आ रहे हैं यहाँ पे या नहीं? हाँ अच्छा, जब शिफ्ट होंगे तो फिर हम बता. मुझे है तो देन आई एम गोइंग टू पुश ये इनको दिखा के ना तो फिर हम अगर like उन्हें this, ऐसा नहीं करना है. दिस इज I don't know if that's going to make a difference or not. Looks like a cancer with a ठीक pulmonary है mass. लाइक दिस. नाउ आई एम ब्रिंगिंग इट अंडर माय एज ट्रांसड्यूसर कितनी है लाइक इनकी? दिस और हल्का सा यहाँ पे मेरा निकाल के इनको कीमो मिलेगी या ठीक है. रेडिएशन दिस इज द तो हाइलम ऑफ द लिवर. दिस द हाइलम ऑफ द लिवर. यहाँ तक मैं इसको सीवीडी को ट्रेस करता हूँ पहुँच. क्योंकि ठीक है? गॉल ब्लैडर बायोप्सी slight very tiny risk of pile जी? usually Pancreatic duct की वो mass है तो इसलिए pancreatic duct लेकिन वहाँ but पे there इतनी is कोई visible नहीं है. risk of pile. अच्छा अब हम चलें नीचे चलें डिस्टल ड्यूटनम में. चलो डिस्टल ड्यूटनम में चलें. अब इट हैज़ टू बी अंडर विजन Yeah. कर लें, लेकिन ये कि अपनी आदत डालें. ये लो मैं उनसे कहता पूछ हूँ लेते हैं क्या चाहते हैं वो, अगर उन्होंने कहा. चलो Saad bhai, can you hear me? Yes, Khalid, we can see you and hear you. Okay, let me just fix this. ये लगा. I think we'll go ahead and present the case. Okay. Okay, and then I just want to show you something, and you can go back after a few minutes. Did you to, if possible, if it's a good case, then go to D1 and duodenal bulb and just show us the structures here because we were just discussing that, if possible. No, I didn't hear you. I said, Khalid, if the duodenal bulb is good in this patient, Okay. then if you go to the D1 and just demonstrate what you do to get the CVD down to the duodenal fall off and then going back all the way. Yeah, I can check on that. I didn't even go into the duodenal bulb yet. But Okay. I want to show something. I'll quickly present the case and then I want to show you something Okay. to the audience. Okay. This is a 75-year-old female patient, previously known case of hypertension, who presented with complaint of abdominal pain, jaundice, and weight loss since 1 month. Her status is post-TRCP stenting. Her CT showed indefined circumferential thickening of the gallbladder, along with pulmonary methods. Okay. So this is a 75 years old woman, and she had thickening of the gallbladder wall and also has some pulmonary lesion concerning for the mets. So the way you look at the gallbladder, because she has some not a best candidate for anesthesia either, so we went straight to the gallbladder. The way you take a look at the gallbladder, you go into the antrum and look for your lesser curvature. Okay? After you look at the lesser curvature, you try to put your transducer on that or suction on the wall towards you. Here, we went straight onto these structures. Do you see that? Yes, clearly. Okay. So one thing I want to ask the candidates, do you see anything
usual, unusual? Let's suppose this is the gallbladder right here. What do you see? What strikes you here? Anybody? Dr. Khalid, it seems to be that the black area seems to be the lumen. I and can't lumen. hear you. I can't hear The you. lumen of the gallbladder seems to be very small. Very in that, small, so, right? so, yeah. And you see the like thickness. There is like Thickness a all tissue. around. There is a mass. Yeah. Okay, that strikes you, but something else even more striking. Can you point to that? Anybody? Walls. Look, walls. The walls of the gallbladder, is it calcified or some these walls? So what does that indicate? Seems to be a chronic inflammation along with some malignancy. Okay. And what is this called? खालिद भाई पोर्सलाइन गॉल ब्लैडर है ये डिस्ट्रक्टेड वॉल्स हैं इसकी कैल्सिफाइड गॉल ब्लैडर की विद इरेगुलर सर्कमफ्रेंशियल थिकनिंग ऑफ द गॉल ब्लैडर वॉल So that is a very, very indicative of gallbladder जी, malignancy. जी, disrupted So this is calcified wall. like, I don't remember when did I see this last. Maybe one case before I might have seen. And you see this calcification of the gallbladder wall and thickness of the wall. You see a tissue, it's irregular. There is a very central small lumen. This is like consistent with the gallbladder malignancy. So you won't see these this porcelain gallbladder and this calcification much in your life, really. So I wanted to show you that. And one thing is, she's 75, pulmonary nodules. I need a little bit help from the management. This is consistent with gallbladder cancer. Do you really want me to do FNA or leave her alone? Because there is a very, very small but definite risk of So the hall says no. bile leak. The hall says no, Khalid bhai. Ji. Just at the image which you have still for us, do you see any hypoechoic hepatic parenchyma adjacent to the lesion? Because I can see there is probably adjacent parenchymal infiltration as well, because the area which shows wall disruption, there is hypoechoic hepatic parenchymal lesion as well. I don't see here right now. Yeah. It's to me it looks like a all normal looking liver here. Okay. So there is no hepatic parenchyma. No, there is no. Okay. The thing here, what you are looking at is you are seeing this area right there. That's a shadowing from the calcification, really. And I don't see, this is the area, I don't think there is any involvement of the liver. All looks like it's contained inside the gallbladder. I can take another better look right there. You see the gallbladder, you see it. It's a nice calcified wall. Pulling it back, maybe a little bit in this area. This area might be, but I think majority of it is really a gallbladder itself. Okay. I think my personal thing is like leave her alone, because Absolutely. and it's not gonna make a difference. I don't Not think at all. she's gonna need gonna get chemo or radiation. No, gallbladder cancer doesn't respond to anything as far as Doesn't I'm respond to anything. Really. That's another thing. And if I see the mass, I have done many gallbladder FNAs for the mass. If you want to do that, you're going to use the smallest needle, 25 gauge needle. In this case, even that may be difficult because of the calcification in the wall, and it may not even go in there. It's going to be hard to push that through. But don't use, if you're going to biopsy the gallbladder or the bile duct, don't use 22 gauge needle or larger needle. Always go for the 25 gauge needle. So this is very consistent with the gallbladder malignancy. It's like a book picture of that. So here, So Khalid, your steps as you go into bulb, GG. just
take the candidates through it while you're doing it, please? Okay, so here you can see the bulb. I'm actually sitting right into the pylorus right Yeah, now. yeah. And if I move the big wheel a little bit away from that myself, you can see where the duodenal apex is. So, and you see a little bit thickening of the fold right in the where the duodenal apex starts, and that's really my area, target area. I'm going to take my transducer right on top of it and then use the suction. I will do right or left, a movement sometimes a little bit to get to my landmarks. But here I get my bile duct here. You see the stent in the bile duct. You see the portal vein right here. You see a portal confluence right here. This is SMV. This is a splenic. When you're looking from the duodenal bulb, I want to point out to all the candidates, the pancreas here, head is in this area, the pancreatic neck is going to be in this area, body here, and the tail here. So it completely flips. A lot of people have a trouble understanding that. And the pancreas right now is right here like this, okay? And this is also because we are looking at the pancreas from the different angle. You are in a long position into the stomach, and this is totally different what you are seeing from the stomach itself, short position right on top of it. Now in long position, trying to take a look at it from the totally different angle, because what you are doing is like right now the transducer is close to the head, and the body and tail and everything is further from that. So from here, Khalid, you trace the bile duct down to the duodenal fall off. Okay. So here you see the bile duct right there. Yeah, we can see Okay. the stent. You see as the well. stent right here. So let's look at. You can see my scope the way I'm holding it. I'm just going to rotate the scope towards to the right. And that's how I'm trying to go towards the ampulla, and just gently adjusting my scope. If you pay attention, my goal is really to keep the bile duct in one place if possible. And I'm just gently pulling the scope back a little bit too, and trying to maintain that position until I get all the way to the ampulla itself. You see the wall of the duodenum falling right down here? You see, this is muscularis. Yeah, we can and see going there, that's called the duodenal fall. Okay, nice, very nice right here. Muscularis propria coming down, coming down, coming down all the way here. So I'm right at the ampullary area. This all is artifact from the fluid and junk and air into the duodenal lumen. So here, and this is right where the stent is, and we are all the way at the ampulla. Can you see that? Yes, very nicely. Okay. From here, what I'm going to do is I'm going to follow that stent all the way to the liver hilum now. I'm still keeping the bile duct right in the same place. That's my goal. So now you're going counterclockwise. Counterclockwise, but gently advancing the scope and sometimes pulling it back if I'm too far. So right now I'm just, bile duct is right there. I keep going, keep going. Now I have to pull the scope back a little bit because bile duct is trying to move to the right of the screen. So I'm pulling the scope back, and rotating, rotating, rotating. Still have the bile duct. Still have the bile duct until all the way to the liver itself. Now you saw that right here, okay? Now I'm going to do the opposite of what I just did. Bring the bile duct back, bring the bile duct back, and going again to the area of the ampulla right there. Okay, can you see the bile duct there? Right there is the bile duct. Yeah. Okay. So that's pretty much. Sorry, I mean, can you see the pancreatic duct there? Oh, you're asking me if I can see the pancreatic duct right there? There is a right there. You see that? Yeah. Okay, right here. This is the pancreatic duct. So you have the stack sign almost. Yeah, almost the stack sign. And other thing is, if you pay attention to the bile duct here, that is also a kind of a thickened wall right there. This is not the, this looks more like a tissue than the debris itself. However,
If I go a little bit further up there, this is the sludge in the gallbladder. Can you, or bile duct I mean. Yeah. You see that all that moving around, that's the sludge itself. Niche bhi. Yeah. So it's a gallbladder cancer which is also involving the bile duct itself too, the bile duct wall. Khalid, once you placed a stent, Ji, how ji. reliably can you, can you evaluate the bile duct wall, because they just tend to become inflamed quite often after the stent? Excellent question. Okay. And what I have come up with that, if I can see the 3 walls of the bile duct, that's inflammation. Okay. If there is no distinction between the walls of the bile duct, which are 3 walls, you are always going to see that white, black, white. If you don't see that, then it's likely is more than inflammation. But when you see that, then it's an inflammatory process. We do not see any distinction here in this area. You see that all is mingled together. It's just one thickness. I have no distinct layers of the bile duct wall. Okay, make sense? Yes. Okay. So that's pretty much about that. And You can because the patient is 75, so if you want to call it a day, yeah, we've no, already got we're all going to the- do it for 5 more minutes, and then we're going to call it a day. I think you guys can go back to the other room if you like. Okay. Let's just do the water. चलो लाओ स्टाइलेट लोड करते हैं डाल डाल We are not with him now, so we'll sort it out with the next one. Okay, there we go. You see, yeah. So nah, good. मुझे दे दो यार, वो दे दो, स्ट्रिंग दे दो. Riyas, we are with you. Okay. There's a mass in the head of the pancreas. We are trying to biopsy that. It's a hard scarce mass. Love it. Good. हाँ CBD trace करें all the way down.
ठीक, शाबाश. Size, let's see the size. Nine millimeter. ठीक है, this is slightly dilated. चले, ठीक है. अच्छा, अभी आप कहाँ पे? फॉल बैक कर गए. नहीं नहीं, ये है वो पर CVD आपको नजर आ गई. तो बेसिकली ये ना आप आने दें. मैं तो असल में मुस्तकिल सक्शन कर रहा हूँ लेकिन वो नहीं, ओके, कीप डूइंग द सक्शन, रिपीटेड. उस पर जितनी है वो निकल जाएगी. हाँ, कीप डूइंग दैट, कीप डूइंग दैट. दे शुड बी नो. हाँ, ये हाँ, ये जी बेटा. क्या आया? हाँ, क्या आया? हाँ, एकदम. ये तो एक जैसे सेल्स है. हाँ, क्या? हाँ, सेम सेल्स है जी. हाँ, ये सारा ब्लड है. बाकी सैंपल्स तो अच्छा आ गया दिखा. ठीक है, और पास लेना है पास जी. सैंपल नहीं काफ़ी है सर. काफ़ी है. हाँ जी काफ़ी. चलो ठीक. सैंपल का अच्छा. ओके, कोई बात नहीं, होता है इस तरह. ये कॉमन नहीं बस. दिस द बाइंडर. हाँ, दिस द बाल डक्ट. बाल डक्ट को ऊपर हाइलम वाली साइड पे ट्रेस करें, नीचे लेके आए दोनों साइड पे. बिकॉज फॉर योर एट योर स्टेज इट्स इम्पोर्टेंट टू ट्रेस द डक्ट ऑन द टू साइड्स towards the pancreas and towards the hilum. This is something that you have to learn how to trace. Big wheel away from you and slight push. Going clockwise, you're going to go to the head of the pancreas. ठीक है, ये हाँ ठीक है. Clockwise pancreas, counterclockwise you're going to go towards the liver. Big wheel up, big wheel down. कोई बात नहीं, ये उसमें हाँ ये that means that you are not basically you're not right there in the lumen, so you just have to go into the lumen, meaning by that you're possibly in the stomach. So come back, identify, go back inside the, ये देखो ना ये, so go back inside the duodenal lumen and keep it collapsed. हाँ ये अच्छा देखो, आपने जहाँ पे देख लिया अब ये नजर आ गया ना. Now keep the suction on. ठीक है, keep the suction on. हल्का सा टर्न राइट और लेफ्ट, थोड़ा सा पुश कर. हाँ हाँ, ये हल्का सा नाउ डाउन राइट लेफ्ट. ओके, ये दैट्स हाउ यू आर एबल टू इमेज द थिंग्स बेटर. ठीक है, ग्रेट. इसकी आपसे प्रैक्टिस करनी. किधर गया फिर? हाँ हाँ, ये ब्यूटीफुल. वो ठीक है, कोई बात नहीं. उसमें होता है तो उसमें जब चिपका के रखें दरमियान में कोई चीज़ नहीं आएगी.
हाँ ये वो मैस आ गया, लिम्फोइड मैस। शाबाश। ये शाबाश, दैट्स इट, गुड। देखा, मैं देखूँ क्या रीज़न क्या। हाँ नहीं ठीक है, वैसे तो यू डूइंग गुड। अच्छा पता है नो, जैसे ही अब फॉर मी इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आई नो। अब किसी मौके पे आता भी है तो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज दैट आई एम ट्राइंग टू कीप द ट्रांसड्यूसर राइट नेक्स्ट टू द mucosa, and that's what I'm doing, nothing else. हाँ जी, लो ना, ठीक है। My scope is straight, that's not an issue. एक जैसे हैं, ये वही है केस? हाँ वही है। नॉर्मल, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, एब्सोल्युटली नॉर्मल। Are we done with the FNA? Yes, we are done with the FNA. We are done with this case. Okay, great. You can So switch to the we'll next have case. to shift to the next case now. Okay. Abdullah, we'll have to move now. चलिए, 4 into 3 centimeter lymphoid mass at the, आप लिखेंगे?